दिस इज़ द Y9 Prime 2019। ये Huawei का लेटेस्ट बजट स्मार्टफोन है और इसकी कीमत है अराउंड 34,000 रुपीज़। Huawei का ये एक फर्स्ट कम्प्लीटली बेजलेस फ़ोन है और इसके अंदर एक मैकेनिकल कैमरा ट्रे है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि Huawei इज़ ब्रिंगिंग दिस फीचर ऑन बजट फ़ोन्स फर्स्ट। इससे पहले कि हम इस फ़ोन के बारे में बात करें, मैं Huawei की ब्लैक लिस्ट वाली सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा अपडेट देना चाहता हूँ। सो एज आई सेड बिफोर, अपनी लास्ट वीडियो के अंदर जो मैंने Huawei की सिचुएशन के बारे में बनाई थी कि यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं होना, Huawei इज़ अ बिग कंपनी, दे कैन हैंडल इट। एंड नाउ ये प्रीटी मच कन्फर्म हो गई है बात। यूएस ने Huawei के ऊपर से बैन ख़त्म कर लिया है एंड नाउ एवरीथिंग इज़ बैक टू नॉर्मल। सो दिस इज़ ग्रेट न्यूज़। और अब ये बात कंफर्म हो गई कि अगर आप ये फ़ोन लेते हैं या Huawei का कोई और भी फ़ोन लेते हैं तो गूगल एप्स पे चलती रहेंगी, सारी सर्विसेज चलती रहेंगी। इट्स नो इशू एनी मोर, कुछ भी नहीं होना। द प्रॉब्लम इज़ कम्प्लीटली सॉल्व नाउ। ओके, Y9 Prime 2019 के बारे में बात करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक कीजिए। अपीयरेंस की अगर हम बात करें तो आई रियली लव हाउ दिस फोन लुक्स। द फ्रंट एंड द बैक लुक रियली फैंटास्टिक। लेट्स टॉक अबाउट द बैक फर्स्ट। मैं हमेशा मेंशन करता हूँ अपनी वीडियोस के अंदर कि आई लाइक डिफरेंट थिंग्स, आई लाइक डिफरेंट लुकिंग फ़ोन्स, आई लाइक टेस्टिंग आउट न्यू स्टफ। और उस डिपार्टमेंट के अंदर इस फ़ोन ने मुझे सेटिस्फाई किया है। इस फ़ोन के अंदर इवन दो द बैक लुक्स लाइक अदर Huawei फ़ोन्स, इन रियलिटी ये काफ़ी डिफरेंट है। उसकी वजह यह है कि लाइट इसके अंदर कम्प्लीटली डिफरेंटली रिफ्लेक्ट होती है। द एंटायर फोन इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, लेकिन दिस इज़ एक्चुअली रियली हाई क्वालिटी और इट हैज़ हेफ्ट। फर्स्टली मुझे ये ग्रीन कलर बहुत पसंद है इस फ़ोन के साथ, और इसके अंदर भी देयर आर 2 शेड्स ऑफ ग्रीन। और जब लाइट इसके अंदर रिफ्लेक्ट करती है तो इट प्रोड्यूसेस अ रियली फंकी लुकिंग इफेक्ट। इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट दैन एनी अदर फ़ोन आई हैव एवर यूज्ड और मुझे ये बहुत पसंद आया। लेकिन इसके आगे जो मैकेनिकल ट्रे है कैमरा की, आई फील लाइक दैट्स द मेन हाईलाइट ऑफ द फ़ोन। बिकॉज ऑफ दिस इज़ द फर्स्ट कम्प्लीटली बेजलेस फ़ोन फ्रॉम Huawei and it's also the least expensive phone that you can get with a pop-up camera. So उसके लिए I applaud Huawei for giving this feature at such a little price. लेकिन usability के अंदर I find this mechanical camera a bit lacking. It's quite slower than the competition. Like Vivo के अंदर मुझे इतना वेट नहीं करना पड़ता कैमरा के ऊपर आने के लिए, लेकिन इस फ़ोन के अंदर there is a noticeable delay. I don't think this is much of an issue because ये फ़ोन competition से काफ़ी कम expensive है. But durability wise I feel like this can cause some problems. What I mean by this is बाकी pop-up camera वाले phones की तरह if you accidentally drop the phone automatically closes the camera to protect it. लेकिन इस फ़ोन के अंदर I feel like शायद ये ग्राउंड को पहले हिट कर जाए और मैकेनिकल कैमरा बाद में बंद हो। So that can be a problem if it's not completely in before it hits the ground. So ये मेरा एक ड्रॉबैक है इस फ़ोन के साथ, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिकॉज दिस इज़ अ मच मोर बजट फ्रेंडली ऑप्शन, इसके अंदर थोड़े बहुत इस तरह के क्वर्क्स होंगे एंड आई एम ओके विद दैम। आई स्टिल थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फोन्स यू कैन गेट एट द लीस्ट प्राइस। मैं मैकेनिकल कैमरा ट्रे को ही प्रीफर करूँगा रेदर देन अ नॉच और अ पंच होल और एनीथिंग लाइक दैट। Overall, I really do like the build quality of the phone. It's thin, it has heft, the back and the front both look really amazing and different. And I think this is well worth your money. हम कैमरा पॉपअप के बारे में बात कर रहे थे। लेट्स मूव ऑन टू टॉकिंग अबाउट द क्वालिटी ऑफ द कैमरा। जो फ्रंट कैमरा है दैट टेक्स रियली गुड फोटोज़, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एंड डिटेल, इज़ परफेक्ट फॉर टेकिंग सेल्फीज़ और ग्रुप सेल्फीज़ एंड फॉर पोर्ट्रेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट। लेकिन जो बैक कैमरा है दैट्स अ स्लाइटली डिफरेंट स्टोरी। आई फील लाइक जो बैक कैमरा का हार्डवेयर है वो इतना अच्छा नहीं है, बट बिकॉज ऑफ Huawei सॉफ्टवेयर एंड AI फीचर्स इट इज़ एबल टू टेक सम रियली ग्रेट फोटोज़। कलर्स जो हैं दे लुक अ बिट वॉश्ड आउट फॉर मी, और डायनामिक रेंज के अंदर इट फॉल्स अ बिट फ्लैट, बट इफ़ यू ट्यून इट राइट यू कैन एक्चुअली टेक सम रियली ग्रेट शॉट्स फ्रॉम दिस कैमरा। इसके अलावा इसके अंदर एक वाइड एंगल लेंस भी है, बट उसके साथ थोड़ा सा फिश आई इफेक्ट आता है जो कि मुझे नहीं पसंद। सो इफ़ यू हैव टू टेक वाइड एंगल फोटोज़ यू कैन, बट आई वुडंट रिकमेंड इट। मैं कहूँगा कि जस्ट टेक अ फ्यू स्टेप्स बैक एंड जस्ट गेट मोर इन योर फोटोज़ दैट वे। सो ओवरऑल the cameras in this phone are pretty decent. They can take some great photos, but I wouldn't say the camera, especially the back camera, is a highlight in this phone.
डिस्प्ले वाइज मैं इस फ़ोन से काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ। यूजुअली इतने ज़्यादा बजट फ्रेंडली फ़ोन के अंदर डिस्प्ले इतना अच्छा हाई क्वालिटी नहीं होता, बट इस फ़ोन के अंदर इट्स एक्चुअली प्रीटी गुड। इट्स मच बेटर देन द Redmi Note 7 विच वॉज द लास्ट फ़ोन आई रिव्यूड इस प्राइस रेंज के अंदर। फ़ोटोज़ जो हैं वो देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं, वीडियोज़ आल्सो लुक ग्रेट एंड इट्स जस्ट अ रियली गुड डिस्प्ले पैनल। वाइट बैलेंस के अंदर थोड़ा सा ग्रीनिश टिंट आता है, बट इट्स नॉट नोटिसेबल। द मेन थिंग इन दिस डिस्प्ले इज़ दैट इट्स कम्प्लीटली बेजललेस। इसमें कोई नॉच नहीं है, कोई पंच होल नहीं है, कोई बेजल नहीं है, एंड यूजिंग दैट इज़ अ कम्प्लीटली सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। You can play games, you can watch movies or videos or whatever without any distractions on the screen. So overall, as far as the display goes, I'm really happy with it. Performance wise, this phone has a Kirin 710 processor. इसके साथ साथ 4GB of RAM है और 128GB of storage. For this price, this processor and this storage is insane. 128GB is quite a lot of storage for just 34,000 rupees. To be honest, I'm actually really surprised by the performance. इस price के हिसाब से the performance is really good. I quickly compared it with the Note 7 and it was slightly faster and smoother than the Note 7. So that's really amazing. Scrolling through the UI is super smooth, there isn't much lag there, you can play extensive apps and games without any issues. It's a really smooth experience. Gesture navigation, जो कि मेरा favorite feature है EMUI के अंदर, it works flawlessly on this phone and it makes the phone feel really smooth and really amazing. And obviously it goes without saying कि इसके ऊपर सारी Google apps चलेंगी perfectly. और इस खबर के साथ कि US ने Huawei के ऊपर से बैन ख़त्म कर दिया है, I don't think there's anything you need to worry about anymore. Just buy this phone if you want to and everything will work perfectly. All the apps like Maps, Drive, Play Store, everything will work fine. So overall I'm happy with the performance. काफ़ी smooth experience है. If you are looking for a good performer, this can be that phone. There's a 4000 mAh battery in this phone और बैटरी लाइफ जो है वो इसे काफ़ी अच्छी है. 2 days, no issue. लेकिन जो थोड़ा सा ड्रॉबैक है वो ये है कि देयर इज़ नो फास्ट चार्जिंग. इट कुड बी अ डील ब्रेकर फॉर सम पीपल, बट आई एम विलिंग टू सेक्रीफाइस दैट फॉर द पॉपअप कैमरा एट दिस प्राइस. सो इट्स नॉट अ डील ब्रेकर फॉर मी. ओवरऑल आई थिंक दिस इज़ अ फैंटास्टिक फ़ोन, स्पेशली फॉर द प्राइस. लाइक पॉपअप कैमरा, फुली बेजललेस डिस्प्ले, ये काफ़ी अमेजिंग फीचर्स है दैट इट्स हार्ड टू बिलीव कि इस कीमत के अंदर वो ये दे रहे हैं. सो आई थिंक अगर आपका बजट है अराउंड 34,000-35,000 रुपीज़, this is one of the best phones you can get right now at this price. So thank you for watching. Subscribe to my channel if you are new and like this video, and I'll see you in the next one. Peace.